हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन जावा वीक 0 का क्विज असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक 0 असाइनमेंट 0। पहला क्वेश्चन क्या है, इन सी और सी प्लस प्लस इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गूमेंट टू ए फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट पास। इसका आंसर होगा base address of the array, option C. The next question, what does the following declaration means? Int pointer ptr 20, इसका मतलब है ptr is a pointer to an array of 20 integer, option B. The next question, what will be the output of the program if the array begins 2200 in memory? Programming क्या है, has included stdio.h, int main, int array 12 13 14 1 6 percentage u and u array @array 0 and array। 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो कोड है, int main int a of 5 1 2 3 4 5 int I j m, then I is equal to plus plus a of 1, j is equal to a of 1 plus plus, m is equal to a I plus plus, print percentage d percentage e percentage d I j m return 0। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Then next question, has include stdio.h, has defined function ij, I has j, int main, int v1 10, v2 20, print percentage d fun v, 1, return 0। 5th का आंसर होगा ऑप्शन ए 10। Then next question, what will be the output of the program? Has include stdio.h, has defined minimum x comma y, x less than y question mark, x colon y semicomma, int main, int x is equal to 13, y is equal to 14, then z is equal to minimum of x plus y by 2, y minus 4, if z greater than 0, print a percentage d z return 0। इसका भी आंसर होगा 10। Then next question, which of the following programming language does not support encapsulation? C. Option A. C programming does not support encapsulation. The next question, which of the following keyword is used to define an abstract data type in object oriented programming? 8 नंबर का आंसर होगा class। Then next question, what is size of in C? Size of is a operator, option A। The next question, if you declare a static variable in C programming, then the default value of the variable is 0। तो पहले से और एक बार देख लेंगे कि इसका आंसर क्या किए हम लोग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी, सेकंड का बी, थर्ड का होगा बी, फोर्थ का होगा ए, फिफ्थ का ए, सिक्स का भी ए, सेवेंथ ए, 8 ए, 9 ए, 10th ए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक आंसर एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चेक आंसर एंड सबमिट पे क्लिक करते ये देखिए सारा आंसर शो कर रहा है। हम लोग जितना भी आंसर किए सारा आंसर ही देखिए करेक्ट है। इसके लिए सारा आंसर करेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, इसका ग्रेडेड नहीं होगा, मीन्स ये इवेलुएट नहीं होगा, ये सिर्फ फैमिलियर होने के लिए दिया है। इसके लिए जब भी हम लोग इसको सबमिट कर रहे हैं तो इसका आंसर तभी हम लोग को शो कर रहा है। बट एक्चुअल जो असाइनमेंट होगा सेम टू सेम इसी तरह का होगा, बट वहाँ पे चेक आंसर का ऑप्शन नहीं रहेगा, जस्ट ओनली सबमिट। व्हेन वी विल सबमिट दैट वन इट विल शो थैंक यू फॉर सबमिटिंग week 1 assignment 1 like that। Then after the assignment date over, then it will publish the result, then we can see which one is correct and which one is not correct। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।